state management. So this is theory, so don't get upset ke why I am teaching you theory. Don't worry, so just listen and focus what I am teaching you, and you will learn a lot of this from me. So cool, let me select the marker. So here, as you can see, that today's lecture is about provider state management in Flutter. So let me change the pen. So let me test it. Okay, cool. So what is state management? State management हमारे पास होती क्या है? So let's try to understand by theory first, then we will go towards an implementation. State management means, state management का मतलब होता है handling how data changes in your app, कि आपकी ऐप के अंदर डाटा किस तरह से चेंज होगा. आपकी एक एप्लीकेशन है, उसका पूरा यूज़र इंटरफेस है, उसके अंदर कोई ना कोई डाटा होगा, कुछ टेक्स्ट होगा, कोई इमेज होगा, कोई आइकन होगा. सो दैट डाटा, ठीक है, दैट डाटा कैन बी फ्रॉम बैक एंड, कैन बी स्टैटिक. सो जो भी डाटा आपकी एप्लीकेशन के अंदर है वो किस तरह से आपकी एप्लीकेशन के अंदर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली, ठीक है. सो वो यूआई को किस तरह से चेंज कर रहा है, ये सारा जो काम होता है ना, ये हमारा मैनेज हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट मैनेजमेंट. व्हाट इज़ प्रोवाइडर? प्रोवाइडर जो कि हम आज कर रहे हैं, तो प्रोवाइडर क्या है बेसिकली? प्रोवाइडर इज़ अ स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन जिसको हम करेंगे. लाइक देयर आर मल्टीपल मोर सोल्यूशंस, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कि आप कौन सी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, या आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. सो कि आपने कौन सा स्टेट मैनेजमेंट चूज़ करना है, लाइक टाइम पे भी डिपेंड करता है. इफ़ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम यू कैन गो विद ब्लॉक एंड क्यूबिट. इफ़ यू हैव लेस टाइम you can go with getex, but getex is not much preferred in the companies, but in startups for the rapid development getex is also preferred. So but for me, what I chose as a state management in the beginning of my career in Flutter mobile application development, मैंने सबसे पहले Flutter के अंदर प्रोवाइडर को ही चूज़ किया था. सो मैंने पूरी रिसर्च की कि आइदर मुझे प्रोवाइडर करना चाहिए, मुझे ब्लॉक एंड क्यूबिट करना चाहिए, मुझे गेटेक्स करना चाहिए. सो काफ़ी हो सकता है आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहे हो. एज अ बिगनर हम सब ह्यूमंस हैं, तो सेम ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम सबके माइंड में रिपीट हो रहे होते हैं. सो डोंट वरी, go with provider, then you can go with getex, or if you have already know about getex, that's well and good, but provider is a good choice. Then you can also go for riverpod. And in industry, the most important and the most commonly used state management is block and qubit. So but I don't recommend you guys कि आप directly block and qubit पे jump करें. If you have not idea about what is state management, you cannot go towards the block and qubit. It's too hectic to learn initially. So I highly recommend you guys to learn first provider, then go towards other state management packages. So वाई वी नीड स्टेट मैनेजमेंट, हमें स्टेट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती क्यों है? वाई कांट जस्ट यूज़ सेट स्टेट? हम सेट स्टेट का ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे पास सेट स्टेट है तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम भी आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे. सो लेट्स सी, सेट स्टेट ओनली वर्क इनसाइड द विजेट वेयर द स्टेट इज़ डिक्लेयर्ड. फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक विजेट है, ठीक है, और आपके पास एक और विजेट है, ठीक है. सो और जो डाटा आप इसके अंदर अपडेट कर रहे हो ना, वो इसके अंदर अपडेट नहीं होगा, ठीक है, दैट्स अ प्रॉब्लम. और जो डाटा आप इसके अंदर अपडेट कर रहे हो ना, वो इसके अंदर अपडेट नहीं होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग ऑन लाइक होम पेज, ठीक है. दिस इज़ आवर होम पेज, ओके कूल. एंड दिस इज़ आवर कार्ट पेज, ठीक है, कार्ट page. So if you have added a product in your cart page, ठीक है, and then some like admin changes something about the product, ठीक है, he changes about some detail of the product, so that detail cannot be directly updated in the cart page. So there is a issue in set state, like the data in one widget cannot be directly updated in the other widget, but there are some solution like prop dealing. So prop dealing के अंदर क्या होता है कि आप ना एज अ कंस्ट्रक्टर के अंदर डाटा को पास कर देते हो, जो कि
डिफरेंट विजिट के अंदर भी वर्केबल होता है, बट दैट्स नॉट रिकमेंडेड। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक स्क्रीन है और ये दूसरी स्क्रीन है और ये तीसरी स्क्रीन है, आपको डाटा यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ठीक है, किसी भी तरह से। लेकिन जो फ्लो है ना वो इस तरह से कि पहले आपकी ये वाली स्क्रीन आएगी, फिर उसके बाद आपकी ये वाली स्क्रीन से आएगी। सो अगर आप डाटा को पहले इधर पहुँचाना भी है तो आप डायरेक्टली तो ऑब्वियसली नहीं पहुँचा सकते। आप उसके लिए क्या करोगे, इस स्क्रीन से इस स्क्रीन को दोगे, फिर ये वाली स्क्रीन इसको देगी। नो डाउट कि इस स्क्रीन को तो डाटा मिल जाएगा, बट यहाँ वाली जो स्क्रीन थी बीच में जिसको तो डाटा चाहिए नहीं था, उसके ऊपर तो ओवरलोड है ना कि भाई मैं डाटा क्यों रिसीव करूँ जब मुझे वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं उसकी, सिर्फ इसको चाहिए ना, क्या सिर्फ इस वजह से मैं इसको लूँ। सो देयर दैट इज़ द इशू कि हम इस चीज़ को फिर प्रेफर नहीं कर रहे होते। सो इसको मैं आपको रियल इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगा इसके इश्यूज़ की, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कूल। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं, एंड if multiple widgets need the same data, you have to pass it manually through the constructor, and that concept is called prop drilling. So why we need state management like provider, हमें state management की क्यों ज़रूरत होती है, होपफुली आपको अब तक आइडिया हो गया होगा। to share data easily between widgets, ताकि डिफरेंट विजिट्स के पास हम डाटा दे सकें। सो इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूँ कि आप किस तरह से दोगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्क्रीन है, ये आपके पास एक स्क्रीन है, ये आपके पास एक स्क्रीन है, ये काफ़ी सारी आपके एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीन है। सो आप एक मेन प्रोवाइडर बना लेते हो। फ्रॉम दैट प्रोवाइडर यू कैन पास डाटा टू एवरी अदर स्क्रीन, जिसको भी वो डाटा चाहिए वो उसको कंज्यूम करेगी एंड उसको यूज़ कर सकती है। और जिस स्क्रीन को वो ज़रूरी नहीं है आप उसको ना भेजें, ठीक है, डोंट यू नीड टू मैनुअली गिव रिक्वायर्ड, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप दें उसको भी डाटा। सो इट डिपेंड्स कि कौन सी स्क्रीन उसको कंज्यूम करती है, आप उसको वो वाला डाटा दिखा सकते हो और सबके पास फिर वो सेम डाटा भी आएगा। फॉर एग्जांपल दिस स्क्रीन से कि दिस डाटा शुड बी अपडेटेड, सो इफ़ दिस स्क्रीन अपडेट्स द डाटा, all the other screen will listen to it and automatically reflect the change in their UI as well. So वो भी उस डाटा को चेंज कर लेती हैं। सो इसके हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द थ्योरी, देन वी कैन डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन टू सेपरेट द बिजनेस लॉजिक फ्रॉम द UI. If you enter everything in the UI, it could be messy and it will be unable to understand after a long time, like you don't even recognize your code, you will say is it my code really. So it is a good practice and preferable practice कि आप अपने UI को business logic से separate रखें। टू अवॉइड प्रॉप ड्रिलिंग, लाइक हम प्रोवाइडर के इसलिए यूज़ करते हैं कि प्रॉप ड्रिलिंग को हम ख़त्म कर सकें, सो डाटा को हर जगह हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर पास ना करना पड़ रहा हो। So to reuse widgets independently. So for example, if you use the prop drilling and you have to pass the data in a constructor. So if a screen is requiring a data, so it must take the data from where it is called. For example, this screen takes some data, it is required in its constructor. So whenever another screen calls that screen, it must have to pass that data. So every screen who calls this widget, they are mandatory to pass the data as well. So what if they don't have that data? Only this screen have that data and all the calling screens who are calling this widget don't have the data. So what gonna happen? There is an issue. So these kinds of issue are resolved by state management solution like provider. So I hope so this concept is also clear कि how to use the widgets independently. So what is the difference between ChangeNotifier and ChangeNotifier? This is the extra part. First we need to understand about this theory implementation. So I said कि हम setState का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको क्यों नहीं कर सकते? Let's test it. So this is the project I was working on. This is basically a chat app, ठीक है? How cool it is. ये अभी मैं बना रहा हूँ, so इसको हम करेंगे बंद and यहाँ से let me select this and open another folder, ठीक है, basically another project. So we were working upon a project whose name was ABC, ठीक है, I guess, ठीक है. So let's test it. So okay,
So there is a project I have already created. Basically I also teach in 101 that is also paid. So Zoom के through या Google Meet के ऊपर मैं students को पढ़ा रहा होता हूँ live. So उनके लिए ये बेसिकली मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है. सो आप लोगों को मैं इस पर बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि हम सेट स्टेट का क्यों नहीं इस्तेमाल करते. सो लेट्स टेस्ट इट. So while this is launching, let me just create some widgets, or I can just wait for it. It totally depends. Anyways, so Flutter is not much difficult. Okay, you can learn in a minimum amount of time. Okay, I learned Flutter almost in 2 years. Okay, actually I learned Flutter from YouTube, from ChatGPT, and I was not provided with a proper trainer. So I learned on my own, but currently I'm at a software house and learning much more concepts of Flutter very well. So this is the application in which we have profile page, and this is like this. So this is set state. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ काउंटर बेसिक एप्लीकेशन. यूट्यूब के ऊपर आप जहाँ कहीं भी जाएंगे ना, मोस्टली आपको ना प्रोवाइडर के कोर्सेज नहीं मिलेंगे लाइक प्रॉपर प्रोजेक्ट वाइज. उसके अंदर ना यही आपको मिलेगा, काउंटर एप्लीकेशन. तो काउंटर एप्लीकेशन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे होते हैं. बट इफ़ यू एक्चुअली वांट टू लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट इन अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इन अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि आप पूरी एक एप्लीकेशन के अंदर लाइक एन ई कॉमर्स स्टोर है, उसके अंदर आप डिफरेंट फीचर्स की स्टेट को किस तरह से मेंटेन करोगे. नो डाउट उसके अंदर कॉन्सेप्ट सारे ये यूज़ हो रहे होंगे, बट एक काउंटर एप्लीकेशन एंड अ प्रॉपर फुल फ्लैज कोर्स, फुल फ्लैज एप्लीकेशन, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. सो लेट्स से कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे कोर्सेज है. करंटली द कोर्स यू आर टेकिंग इज़ द प्रोवाइडर बेसिक मैनेजमेंट स्टेट मैनेजमेंट वन शॉट वीडियो. बट इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोवाइडर इन full-fledged course, in a full-fledged application, you can take this provider advanced implementation course, जिसके अंदर add to favorite किस तरह से करना है, theme provider क्या होता है. So this is a paid course and there can be much more feature as well. It totally depends upon the course. So let's say कि this is the basic counter application and this is a basic, you know. And what I am going to do, I am going to wrap this with a column, okay, so that I can easily teach you what I am trying to explain. Main axis alignment dot center. So and next thing I need to do is just simply add a comma here and elevated button. एलिवेटेड बटन देयर ऑन प्रेस्ड एंड चाइल्ड के अंदर मैं दे सकता हूँ इसको टेक्स्ट विजेट एंड नेविगेट. ठीक है, नेविगेट टू नेक्स्ट स्क्रीन के लिए मैंने ये लगा दिया. सो दिस इज़ बेसिकली अ बटन एंड ऑन दैट बटन आई विल मूव टुवर्ड्स अनदर विजेट. So let me close it and just let me create another widget here. So for example I said okay, stateless widget and I will just name it another widget. Okay, and other widget. Cool. And here I can just use scaffold and in its body I can just say center and child, and here I will show some kind of text. Okay, some text. Cool. So let's try it by navigating it. Navigate, navigator dot push, navigator dot push, and here I just need to pass the root, material page root, and here builder I can just say another widget. So let's test it. navigate पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक नई स्क्रीन पे पहुँच जाता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है some text. For example I am just incrementing this and I want to show that text instead of there in the next screen. How much I have incrementing, like you can see that I am incrementing and it's totally working. What I want now, I want instead of showing this text here, I want to show that text in the next screen. So how can we do it? We can simply first of all remove this text from there. Cool. And just want to show that text in the, you know, in the next screen.
So let me just do it. So there I want to show the total count of the increment से कितना increment हो गया वो मैं next screen पे show करवाना चाहता हूँ. तो next screen पे मैं show किस तरह से करवाऊँ. So next screen पे show करवाने के लिए यहाँ पे अब मेरे पास वो डाटा नहीं है. अब आपको सही से समझ आई होगी. So देखें ये एक मेरे पास widget है, ठीक है, इसके अंदर डाटा है, ठीक है, इसके अंदर ये इंट नम हमने रखा हुआ है बट जो कि इस विजिट तक एक्सेसिबल है. ये जो नम है काउंट वेरिएबल है इसको मैं इधर एक्सेस नहीं कर सकता लाइक नम, ठीक है, आई कांट एक्सेस डायरेक्टली, ठीक है. सो फॉर लाइक देयर आई कांट यूज नम देयर लाइक दिस नम डॉट टू स्ट्रिंग आई कांट एक्सेस, ठीक है. देयर इज़ एन इशू लाइक in basic state management you can't directly use this data because that data is declared and initialized in this widget and I can't directly use there. So one solution can be, what kind of solution can be, you can just simply require there, ठीक है, like int num like this and just use required this dot num. Now the issue will be resolved. Just you just need to pass that num from the constructor and you can see that I am just navigating it and some text की बजाय अब यहाँ पे जो हम रिसीव कर रहे हैं उसको मैं प्रिंट भी करवा दूंगा, ठीक है, डिस्प्ले करवा दूंगा बेसिकली. सो जस्ट लेट मी रीस्टार्ट द एप्लीकेशन. So navigate and here you can see the count. So I just want to increment, so increment and just want to navigate. So here you can see that I can see the count which is 16. So I hope so this thing is now clear to you. And what if I actually change that data here as well. For example I just want to say कि इसको भी मैं स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दूं एंड यहाँ पर जो मैं नम रिसीव कर रहा हूँ उसको भी मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ. जस्ट लेट मी डू इट एंड यहाँ पे मैं लगाता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड ऑन प्रेस पे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि सेट स्टेट कर दो आप सिंपली नम को प्लस, ठीक है, नम को प्लस. इस तरह से डायरेक्टली नहीं कर सकते हम, इसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा लाइक अच्छा वो वैसे विजिट डॉट करके भी हो जाना था. एनीवेज सो वाइड इंक्री मैं एक मेथड बना लेता हूँ और उसके अंदर इंक्रीमेंट को पेस्ट कर दूंगा widget dot num plus. So and in that set state I will just call the incree. So how cool it is, and you can see that this is the initial page whose name is profile page and this is another widget whose name is another widget. Both are stateful widgets. Cool. And what I want to say कि यहाँ पे मैं डाटा को अपडेट कर रहा हूँ इवन दो कि ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर से ही रिसीव हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ दोनों जगह उसको अपडेट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर भी मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ. फॉर एग्जांपल दिस इज़ ऑन द फर्स्ट स्क्रीन, यू कैन सी दैट देयर इज़ डाटा एंड नेविगेट करता हूँ तो यहाँ पर भी डाटा होता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, जस्ट लिसन टू वेरी केयरफुली. इफ़ आई गो टुवर्ड्स द सेकंड स्क्रीन एंड ट्राई टू चेंज द डाटा हेयर, ठीक है, you can see the data is being changed in the second screen. But what if I go back here? This is the problem. I hope so you guys understood. I just want to restart the application to show you one more time. See, if I navigate, both screen have the same data as passing through the constructor. If I go towards the first screen and try to increment some value, there I incremented to 10 and just want to navigate. Once the navigation is done, the data will be passed through the constructor from screen 1 towards the screen 2. So let's go towards the screen 2. Here you can see the data. So what if the second screen who received the data actually wants to change the data as well? So here you can see that I just want to change the or update the data on the second screen. I just change towards the 30 to the 30. So the data is being changed to the 30, but in our first screen the data will be 10. Why? Because this is a basic set state management. So if I go back here, you can see that we still have 10. Cool. And if we increment this like 15 and then navigate again, so there is 15. The 30 which was updated by this screen
gonna be lost, will be lost. So I hope so this concept is understandable for you guys. Hopefully if you have any query, any question, you can feel free to ask in comment section, and you can directly DM me on my Instagram. My Instagram is as Tashebamza. So don't worry, just try to learn and explore some new stuff. So what is the solution now? The solution is provider and other state management packages. So let's come over here. I hope so you just understand the why of this question, why just can't use setState. So now let's move towards the provider. So here comes in the savior comes in, which is provider. Now let's say there is two concepts, two major components of provider. One is change notifier, one is change notifier provider. Now what both they are? ये दोनों क्या चीज़ें हैं? Change notifier is like a class that holds the data, who will supply the data, just like a supplier who supplies the data to overall the application. Like you can take the example of grocery stores, there is a person who supplies the data or products to all the malls, all the stores. Then that store will provide the stuff towards the customer. इन दिस एग्जांपल जस्ट टेक कि आपके पास जो प्रोवाइडर है वो एक पर्सन है, वो एक जो कि सप्लायर है, वो सारे ग्रोसरी स्टोर्स को डाटा दे रहा है, प्रोडक्ट्स दे रहा है. देन दैट ग्रोसरी स्टोर प्रोवाइड्स दैट डाटा टू एक्चुअल consumers, actual customers. In this case, the actual consumer or customer is the UI screens who actually consumes the data. Hope so this concept is understandable for you guys. Now I was talking about the change notifier and change notifier provider. Change notifier is basically the one who holds the data, who holds the logic, who holds the business logic layer. So and the change notifier is basically a provider who actually gives the object, ठीक है, object of our change notifier, जो कि पूरी एप्लीकेशन को कहीं भी हम कहीं भी यूज़ करना चाहें, कोई भी स्क्रीन यूज़ करना चाहे तो उसको ना चेंज नोटिफायर का हम ऑब्जेक्ट दे देते हैं ताकि वो स्क्रीन यूज़ कर सके. उसके लिए हमें रैप करना पड़ता है हमारी एप्लीकेशन को विद चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर. सो ये कैसे करते हैं वो भी हम करेंगे. सो जस्ट कम ओवर हेयर. चेंज नोटिफायर क्या होता है? द स्टेट मैनेजर क्लास वेयर योर डाटा एंड बिजनेस लॉजिक लिव्स, एज आई टोल्ड यू. Change notifier provider, its job is to provide an instance of your change notifier class to the widget tree. widget tree में जहाँ कहीं भी कोई भी class, कोई भी widget उसको consume करना चाहेगा, change notifier provider उसके लिए एक object दे देगा. So this is the way for using change notifier provider. And simply first we need to do implementation so you can learn without any doubt, any more query. So just come over here and just import a package which is provider. For that enter a command flutter pub add provider. So this is done and just close it. And for the solution, what you are going to do, you are just removing this all stuff and raise this all. You don't actually need to do all of that. So just I can design this again, no worries. Cool. This is the initial screen and just let me do a restart. So this is the counter basic application. Cool. And what we can do, we can create a file which is my provider, my underscore provider dot. Cool. And here I can just write my provider and I just need to extend it, inherit from a class whose name is change notifier. So change notifier से हमने कर देना, change notifier provider से नहीं करना, change notifier से करना. So this class basically actually holds our data int num. This holds the data, like for example initially it is from 0, and this also holds the business logic. For example void increment. What void increment will do, it just simply increment
the our num. Cool. And after a change in the function in our data, what we are going to do, what we need to do, actually we actually need to do a call of a function notify listener. दिस नोटिफाई लिसनर इज़ वेरी मैंडेटरी. अगर आप ये नोटिफाई लिसनर को कॉल नहीं करते तो जो स्क्रीन्स इस प्रोवाइडर को कंज्यूम कर रही होंगी उनको चेंज ना नोटिफाई नहीं किया जाएगा. नोटिफाई लिसनर इज़ जस्ट लाइक कि कुछ आपके मोहल्ले में हुआ है और एक फुप्पो है, ठीक है, या मोहल्ले में एक मासी है, वो हर जगह जा जा के घरों में ना बातें बताती है कि भाई इस तरह से हुआ है. तो बेसिकली ये आपके ख़ानदान की, आपके मोहल्ले की मासी है या आपके ख़ानदान की फुप्पो है, जो कि कोई भी कांड होता है ना ख़ानदान में कहीं भी, वो हर जगह सबको जाके फैला देती है बात. सो दिस इज़ लाइक फुप्पो. जब मैंने फ्लटर सीखा था ना तो फुप्पो के नाम से ही इसको याद किया था कि नोटिफाई लिस्टर. बट एक्चुअली मेरी फुप्पो काफ़ी अच्छी हैं, बट फुप्पो मशहूर हैं कि फुप्पो ऐसी होती हैं, फुप्पो ऐसी होती हैं, बट फुप्पोज आर गुड. मेरी फुप्पो तो अच्छी हैं. एनीवेज, सो नोटिफाई लिसनर क्या करता है, सिंपली यूआई को नोटिफाई कर देता है कि देयर इज़ अ चेंज, यू नीड टू अपडेट. सो दिस इज़ ऑल. इतना ही आपको इसके अंदर करना था. बट नाउ द नेक्स्ट थिंग, जस्ट इफ़ यू रिमेंबर, देयर यू सा समथिंग लाइक चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर. आपको अपनी रन ऐप जो आपने वॉइड मेन के अंदर दिया हुआ है उसके अंदर एक विजिट यूज़ करना है जिसका नाम है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर. उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आपको, एक क्रिएट एंड एक चाइल्ड. सो लेट्स क्विकली डू इट. Here I just come towards the main dot. Here you can see that my app. So remove this, ठीक है. एंड यहाँ पे आपको एक यूज़ करना है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर. सो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर आपको एक चीज़ देनी है, वो है आपकी जो प्रोवाइडर है, ठीक है, उसका नाम क्या है, माई प्रोवाइडर. एक माई प्रोवाइडर दे दिया. एंड चाइल्ड के अंदर आपको सिंपली आपको अपनी ऐप दे देनी है. सो दिस इज़ डन. कुल आपने चेंज नोटिफायर भी यूज़ कर लिया है, आपने प्रोवाइडर की क्लास भी बना लेनी है. नाउ हाउ टू यूज़ दिस प्रोवाइडर, how can we do that? So let's say I want to use this there, or I just want to create another widget like stateless widget. Now if we are using provider or any other state management, we actually don't need to use stateful widget. We can just directly use setState and like another another widget. Simply I just use scaffold and body के अंदर center के अंदर child text, ठीक है. Here I will use provider data. जो प्रोवाइडर हमें डाटा दे रही है ना वो हम यूज़ करेंगे. एंड मेन डॉट डाट पे फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ another widget and just I want to restart. Why this is not just happening? ओ सॉरी, इधर मैंने होम की जगह दे दिया है. सो बेसिकली इधर देना है another widget. So I will use provider data. Cool. So here comes in, so this is a basic stateless widget in which I will use the provider. So before that, just understand one or two more thing. Now anywhere inside my app you can access counter like this. My final counter is equals to context.watch. एंड इसको इस तरह से आपने प्रोवाइडर की क्लास का बता देना है. सो ये क्या चीज़ है इसका बताता हूँ आपको, और फिर इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं. वॉच क्या होता है, रीड क्या होता है, आई विल शो यू गाइस. फॉर एग्जांपल फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे वॉच यूज़ करता हूँ. एंड यहाँ पे आप किसी भी विजिट के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं. आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं फाइनल लाइक obj इज़ इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर उसका सिंटैक्स क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको ना इधर यूज़ करना पड़ेगा इसको, context डॉट वॉच, ठीक है, एंड लाइक दिस. एंड यहाँ पे वॉच को आपने ना बता देना है कि कौन सा आप प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो. तो माई प्रोवाइडर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ. नाउ फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट आई कैन एक्सेस द डाटा, आई कैन एक्सेस द फंक्शंस, आई कैन एक्सेस एवरीथिंग आई वांट फ्रॉम द प्रोवाइडर. सो आई जस्ट वांट टू रेज दिस एंड obj dot, now you can see that I can access this num dot to string. So here it is, you can see the I can access the data from this obj. Now what if I want to use the floating action button, floating
action button on in it's on pressed, I just want to increment. From that I can use the obj dot increment, but there will be an issue I will show to you guys, but here everything is okay. So now I can just simply call the increment method like this, and just simple is that. Now if I click on this, the data will be incremented. How cool it is. So you can see that this is the basic widget I created. There is no stateful widget, there is no set state. Now if another widget wants to call this widget, for example, like this widget, this is is there any navigation? No, there is not any navigation. For example, I create another widget like stateless widget first, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया है FIRST first widget, and this widget actually wants to call, ठीक है. So on floating action button, this widget wants to call this widget, another widget. So I just want to use navigator dot push, and I just can say material page route, and material page route के अंदर builder दे सकते हैं, builder के अंदर. So here I can just simply call this widget name. I don't need to pass the data. So I hope so the previous problem is solved. Like if any widget wants to call a specific widget who needs the data, they don't actually need to pass the data. सो इसके पास डाटा था भी नहीं, ये कहाँ से देता. ये कहता भाई मैनू आप नहीं है पता, मैनू आप नहीं आंदा. जस्ट इन सिंपल वर्ड्स, लाइक आपका दोस्त होता है एग्जाम में आपसे पूछ रहा होता है कि यार मुझे बता दे, और आपको खुद नहीं पता होता है कि भाई मैं कैसे बताऊं, और वो छित्ता हो ही जाता है कि भाई बता बता बता, तो क्यों नहीं बता रहा. सो वही कहता है मैनू आप नहीं आंदा, मैं तेनू की में बतावा. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग. So just remove it, and simple is that. So there is one more thing, like I just show you the simple way to call the data, call the function, and there is a one more way to call this. This is read. Okay, so one is watch, one is read. So I can use the read as well. So everything is perfect. And there is a concept about read and watch in as well. So difference between context.read and context.watch. Context.read gets the provider once, does not rebuild the widget when the value changes. Useful when you only want to call a method or use a value temporary. So basically ये ना widget को rebuild नहीं करता, ठीक है, बार बार. So let me say, so for example, this is the thing. I just want to show you the previous one was not refreshed, not restarted. So here you can see that it only calls once. So it called once the obj like this, and it is not actually incrementing because we have used read method here. So if you want कि आपके पास रियल टाइम में डाटा अपडेट भी हो, फॉर दैट जस्ट गो फॉर वॉच. आपको वॉच यूज़ करना पड़ेगा. बट जो अगर आप रीड यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप वो वन टाइम होता है, वो वन टाइम ही करता है, वो फिर यूआई को अपडेट नहीं करता. सो इसका यूज़ केस कहाँ पर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने बैकएंड से एक डाटा को सिर्फ वन टाइम ही फेच करना है. सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन यूज़ द रीड. बट फॉर आवर यूज़ केस वी वांट टू शो द अपडेटेड इंक्रीमेंट. सो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ द वॉच. सो आई होप सो आपको रीड एंड वॉच का डिफरेंस समझ आया होगा. वॉच के अंदर सिंपली क्या, सब्सक्राइब टू द प्रोवाइडर, rebuilds the widget whenever the value changes, after notify listener, use it when the widget needs to display data change. जो भी डाटा चेंज हो रहा है उसके लिए यूज़ किया जाता है. इन सिंपल वर्ड्स, रीड यूज when you just need to use or call something once, no rebuild. जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जब यहाँ पर आपको सिर्फ वंस एक दफ़ा यूज़ करना है, आप रीड यूज़ कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि एक आपका जो डाटा है वो चेंज भी हो, तो उसके लिए आप वॉच यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स जंप टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स हमारे पास क्या होते हैं? कंज्यूमर्स के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये भी वॉच की तरह ही है, ठीक है, बिल्कुल वॉच की तरह. बट वाई देर इज़ अ नीड ऑफ कंज्यूमर व्हेन वी हैव वॉच? जब वॉच से हम सेम काम कर सकते हैं तो हमें कंज्यूमर क्यों ज़रूरी होता है? विद वॉच द इंटायर बिल्ड मेथड रीबिल्ड्स व्हेन द वैल्यू चेंजेस. For example, this is important stuff to learn. For example, if this data increments, the data here changes, the entire build runs, the entire application refreshes, the entire each component of the UI will rebuild again.
So this is not an efficient way to handle the UI. So what else we can do? We can use consumer. Now what are consumer? Consumer basically consumes the data and rebuilds only the widget who's wrap with the consumer. So जिस widget से हम consumer को wrap करेंगे सिर्फ वही rebuild होगा. So उसका syntax क्या simple basic सा, this is the syntax of using a consumer. I will show you guys. Just remove it. Cool. And just remove it as well. For example, I want to use the consumer. Okay. For that I can use I can basically wrap this with a widget called consumer like this, and here there are some required properties or of consumer, like there is a builder. So I must have to give the builder like this, and there it does not uses the like this, and here I just need to remove the obj as well. But here you can see that I can't directly use num. I can access it with value. Okay, but for that I just use to value dot inquiry. Why I can't just acha, there is an issue. I didn't give the consumer the type of the provider. So just say my provider, or you cannot access the methods from value dot increment. Now you can see that I can basically access the increment. So if I want to use num, that is a data in our provider, I actually need to wrap this widget with the consumer as well, consumer, and here I just need to use builder को इस तरह से builder देना, and it doesn't check child, so simply like this. Now and I can access this num using object. Now this builder gives object like value. This is also giving us object, so you can name anything you want, but by default value is good, and value dot num. So by this you can directly access. Now I just made the same mistake, like you have to must describe the type of your provider, my provider, simple is that. Now if I hot restart, and simply it is initially 0. If I change, you can see that data is being updated. So how cool it is. And one more important thing, if I go to debug console and if I show you one important thing, print I am building, I am rebuilding. So let's see if it works or not. So यहाँ पे I just want to refresh the entire application. So first of all it will show I am rebuilding. So if I tap on this, you can see there is no I am rebuilding again. So only the widget who needs to update changes. ठीक है, इसके अलावा पूरी एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल यू यूज़ अ कॉलम एंड यू यूज़ सम अदर स्टफ एज वेल. फॉर एग्जांपल आई रैप दिस इन अ कॉलम and I just instead of this only this I use some other widget as well. For example, there is an elevated button and it will perform some action and text like something like that. So and their column I just need to give main axis alignment dot center. So this is basically another widget. There can be multiple more widget as well, but only the data which we are going to rebuild updates. For example, I just restart the application only once. This build method works only one time. ठीक है, only one time ये rebuild होगा. इसके बाद जो भी आप UI में change कर रहे हैं ना, सिर्फ वही portion of the screen update होगा. इसके अलावा आपके application में जैसे ये एक कंपोनेंट था, ये एक UI की चीज़ थी, बटन थी बेसिकली हमारे पास, तो बटन ये अब रीबिल्ड नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, बस जो चीज़ चेंज हो रही है ना वही चेंज होगा. सो आई होप सो आपको प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट की समझ आई होगी. नाउ दिस इज़ द बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ हाउ टू यूज़ provider state management in a project, in a real world application. So for that you can explore the internet, you can explore my website. On YouTube you can not find easily के proper एक course के अंदर provider state management किस तरह से
इम्प्लीमेंट किया होगा. So you can go to my official website bigbrains.com. There you will get a lot of courses. Like I am offering multiple paid courses, multiple free courses. There is a lot of stuff. So if you do these these all the courses, I assure you 99% you will get your job, you will get your internship, you will crack the interview. So and rest of the 1% is your luck. So I hope so everything is now clear to you. You just watch this one short video of provider. Now there is another concept of provider which is multi-provider. Just a little bit of syntax change and you can easily do that as well. So but this will be in another video. I am just tired making videos for too long. Like if I see this, the video time is 44 minutes. I am continuously speaking from last 44 minutes. So in the second video I will make this video. And if you want the proper implementation of provider state management, a proper advanced implementation in a real world, so you can go for this course in a real world application में किस तरह से यूज़ करना आप इससे कर सकते हैं. So I hope so आपको प्रोवाइडर की समझ आई होगी. ये पहला प्रोवाइडर ही है था जो कि मैंने एज अ स्टेट मैनेजमेंट यूज़ किया था. So I hope so everything is clear, and if you have any question you can directly visit my official website or you can easily access my YouTube चैनल bigbrains.com. मेरी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो हेयर मल्टीपल स्टफ इज़ अवेलेबल. So I have already created much more videos regarding Flutter. You can see there are 51 videos and currently I am making this playlist advanced Flutter mobile app development. So इसके अंदर सारे advanced topics मैं include कर रहा हूँ जो कि आपको आने चाहिए. Like this कि clean architecture क्या होता है, Flutter का road map क्या होता है. So I am just making and just started with all of this. So one by one करके मैं बनाता जा रहा हूँ. Hope so today's session was beneficial for you. So मिलते हैं फिर proper किसी और course